My today topic is aromatic homocyclic non-benzenoid aromatic compound. In this topic, non-benzenoid aromatic compound. Aromatic compounds which do not contain benzene ring is called non-benzenoid aromatic compound. ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करते उन्हें नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एजुलेन. Structure of azulene is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membered ring and 5 membered ring. 1, 2, 3, 4, 5. Second example is B. Tropolone. 1, 2, 3, 4 bond, 5, 6, 7 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन. डबल बॉन्ड O. टोरोप्लीन का स्ट्रक्चर ये है. सेकेंड हेडिंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड हैज एट लीस्ट 1 हेट्रो एटम्स, जिसमें 8 हेट्रो एटम होता है रिंग में, उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. साइक्लिक कंपाउंड having at least 1 hetero atom in the ring are called heterocyclic compound. These are further classified into 2 categories. These are further classified into 2 category. First is alicyclic compound. Alicyclic is also known as aliphatic compound. भी कहते हैं. Aliphatic cyclic compound containing at least 1 hetero atom in ring is known as alicyclic heterocyclic
cyclic compound. For example देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O 4 लोन पेयर O ऑक्सीजन पे, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सीराइन. सेकेंड एग्जाम्पल इज सिंगल D, इसे बोलते हैं हम THF मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन. इसमें ऑक्सीजन बॉन्डेड 4 लोन पेयर से अटैच है. टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन ऑल्सो नोन एज THF. अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं आगे एरोमेटिक बी पार्ट है इसका हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का. एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड. एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड. इसमें क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स containing at least one heteroatom in ring is called aromatic heterocyclic compound. फॉर ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो केवल एक हाइड्रोएटम कंटेन करते हैं रिंग में, उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल पायरोल NH कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, NH बॉन्ड से अटैच होता है. बी एग्जाम्पल है फ्यूरिन, जो हम लोग फ्यूरिन पिछले स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं. थायोफिन, S1234 थायोफिन and pyridine. Just these are the example of aromatic heterocyclic compound. Next topic is representation of organic molecule. Representation of organic molecule. Organic molecule can be classified into 3 parts. First is molecular formula. Second is structure formula. Structure formula can also be classified into 2 parts. Expanded structure formula, condensed structural formula. Third is bond line representation. For example, heptene. Today we discuss about example of heptene. In the case of heptene, there is 7 carbon. Then the molecular formula will be C7H16. Condensed formula
condensed structure formula. First of all, we draw 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and place valency. Check the valency. 1 CH3, CH2, 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 and CH3. This is the condensed structure formula. Third is expanded structure formula. Expanded means to show the bond. C 1, 2, 3. First of all, we consider 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2 hydrogen, 1, 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 hydrogen, and 3 hydrogen. And last is bond line representation. Last is bond line representation. There is 7 carbons, so put the 7 carbon with dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. And we make a line with the dot. We make a line with the dot. This is the way to represent bond line representation. Then we discuss about alkene. What is alkene? Alkene. Alkene means alkene are the compound which contains single bond. Single bond. 1 sigma single bond. Alkene contains 1 sigma. General formula is CnH2n plus 2. Second is alkene. It contains double bond. It contains double bond. 1 sigma double bond. Third is alkyne. Alkene general formula is CnH2n. Alkene general formula is CnH2n minus 2. It contains triple bond. One sigma and 1 pi bond in alkene. In alkene CN2n minus 2 alkene triple bond which contain triple bond, it contain 1 sigma and 2 pi bond. Thank you friends. Please do not forget and like and subscribe my channel.